am going now. I am going here, you are giving this. List of matters raised with permission, Sri Rajendra Gupta ji. Honorable Chairman, sir, thank you for giving this opportunity. I feel one by one, please. All others sit. All others sit. Let him speak. Yesterday we had a discussion. Yesterday, sir, with the Parliamentary Affairs Minister and the leader of the House, Parliamentary Affairs Minister, you were present. All our members from here were present. Sir, we referred a proposal to the government. You were there with us, sir, to let us get into a discussion on the urgent need to discuss electoral reform. They can do in whichever wording they want. Let us begin a discussion, because that is the need of 15 opposition parties this side. And let us have a fruitful discussion on this and let the House run. Just 1 minute, sir. एक second. Sir, we gave this proposal in your presence. In your presence, Congress party was there, DMK was there, all of us, the Trinamool was there, all of us were there. And we agreed that whatever the wording be on electoral reform, we can have a discussion. The government was supposed to come back to us. Nobody has come back, but we are ready, sir, for a discussion here and now, and no one wants to disrupt this House, sir. Yeah, I will ask the Parliamentary Minister to respond. Derek O'Brien just mentioned, it is fact that yesterday in the Business Advisory Committee, I had given assurance that I will come back with the decision taken on the matter. However, I also had a request that if you have additional matter to be given, because it is opposition means not only 4 parties, there are many parties. However, 12 parties here will want a discussion on election reform. What is his name? No, sir. He is the Honorable Minister. No. The Honorable Minister is responding. No, dividing opposition. Oh, 1 minute. I have no interest in dividing you. No. He is responding. He is telling he is coming back. He is not saying no. He is not saying no. He is saying he will come back. Let him come back. This is what we have discussed yesterday also. Everybody was there. Yes, please. Others, please sit. Leader of the opposition. Yes. Sir, it is not one party, 2 party, 4 party. It is the decision of all opposition floor leaders. We have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That's why I request the Parliamentary Affairs Minister, don't divide us. If you try to divide us, we will be more strong. No. And this is a cheap gimmick. They are doing it. You can't divide us because we have come with ideological background. It is not like shifting from here there. Let me put my word. You have asked, and the ministry has responded. He will come back, and he is not rejecting your demand. Let him come back. You should give some time. Let him come back. This is what it has been agreed. Sir, the last session was washed out completely. There is a trust deficit. We want the assurance. Why, sir? Very humbly, we want Parliament to run. Why doesn't the government want a discussion when everybody here wants a discussion? No, he is not saying, he is not denying yours. No, please sit down. The same subject need not be raised by everyone. He has, tell me. Sir, No. Sir. I will give you a chance. Sir, Honorable Chairman, sir,
our request to the Honourable Minister is that let him uphold the statement which he made. He said that the government is ready to discuss on electoral reforms. We are telling, by all means, let that be the topic of discussion. We are in agreement. We are in agreement with him. No. Yes. Let him speak. Yes. We are in Let him agreement. speak. And there is no division among the opposition parties. All of us are united. And we want this topic, electoral reforms, let him coin the title topic in any way, in any fashion. And let him pick up any rule. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. बिट्टो जी, सर ये गंभीर प्रकरण है। न जाने कितने ऑफिसर्स 22-23 officers have committed suicide under the pressure, and this government is seeking time. Even today, sir, in the morning, in Moradabad, the officer have committed suicide. How many lives they want to take? And do something which is this is not for the first time. Many times the discussion has taken place on election reform. I can quote. Please, Honourable Minister of Parliamentary Affairs, please respond. Allowed to make proper response, which shows that you are not interested in discussion. While responding to him, I was only halfway to my response. He stood up. Then I would like to leave the entire floor to you, and you keep speaking then. I will tell you one thing, when one member is speaking, please don't disturb. I will give everybody a chance. Sir, let everybody speak. I reiterated. I was halfway. I was reiterating what I said, but I will make it clear again. Nobody is undermining any matter which was brought out by the opposition party yesterday in the all-party meeting or BSc or today. What I am saying is, it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult, because you have to give certain space. I only added as an additional point that there were other members who raised other issues also. So it is wrong on your part to say that there is no other issue of other parties. Other than 12 opposition parties, there are other political parties who represent different states. So don't deny the right of others. While putting forward your demand, you have right to put forward. You cannot reject other conditions. However, I am saying again, the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion, you can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. So 1 minute. The same subject again and again, I cannot ask the minister to respond. He has responded it. We have to give some time. Yes, it is agreed in the Business Advisory Committee yesterday that let the government come with. Yesterday, after the BSc meeting was over, after you have left, we discussed with the minister. We also gave the topic and all. He said he would come back to us by 9 p.m. Sir. Now let him tell, not to wait any time, sir. Let him tell some time. Yesterday he told 9 p.m., but he has not come back to us. We are waiting. You want to respond? No. You sit down. Sit down. No. You please sit down. Hey, you please sit down. You please sit down. Dada, buzun, Dada. Please, buzun, Dada. No. Please, buzun. Please, buzun. No. Please, buzun.
Honorable Minister of Parliamentary Affairs. Honorable Minister of Parliamentary Affairs, are you in a position to give a time frame? Once I have already, with the guidance of the Honorable Chairman, I have already stated that we will come back soon. If you insist on the timeline, you can create, the timeline is set by you. I am obliging the direction of the chair. What I'm saying is, once again, please don't put conditions on the timeline. However, I can say that we will try to come back as soon as possible. The problem is, timeline is not the problem. The problem is a trust deficit. The whole session, they did not have a discussion. How can we trust them? How can we trust them? What timeline? We want a discussion today. What timeline? How we can discuss today? Sir, even if the discussion were to be allowed, it has to be decided by the BSC. You please sit down. Now, Sri Rajendra Gupta. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. I am humbled to speak the first time during a tenure as a Member of Parliament. I raise the request to urgent. Derek ji, this is not the right. Rajendra Gupta ji, are you addressing or not? Sir, the urgent operations of Shahid-e-Azam. Rajendra ji, you address to the chair. Yeah. You don't address. Please, Baide. Sir, urgent operations of Shahid-e-Azam. Derek ji, you please. Are you, Rajendra ji, are you? I will explain later. Okay. Sri Raghav Chanda. Sri Raghav Chanda. Sir, Chadda. Sri Raghav Chanda. Chadda. Chadda. Sri Raghav Chadda. Sir, as much as I wish to address this important issue, the House doesn't seem to be in order. No, you address to me. I am giving you the chance, you address to me. But sir, there is a... No, you are having a mic, you address to me. You address to the House. Sir. If you are not addressing, then I have to call others. Sir, the House is not... No. How can I raise this? No, you can speak now. You are speaking to me now. You should, but should sir, speak. The House is not in order. Everyone is over speaking. Now, Raiga Krishnaya. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Sir, I am allowing you, but you are not allowing the House to run. What I have to do, you tell me. No. Nobody. They are not saying. They are not denying. If they are denying, they will go, sir. I know they will go up to 19. No, you have to wait. So my request is to you allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country they want to kill the democracy. No. Nothing will go on records. Now, nothing will go on records except Sri Abdul Wahab. Sir, last session में भी ऐसा ही हुआ था. Abdul Wahab, are you addressing or not? And I cannot speak. No, you can speak, whether you want to speak or not.
See, in this, when the House is talking Then Sandeep Kumar Pathak. Sandeep Kumar Pathak. Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Respected Chairman, sir. Sir, banana is a crucial crop for small and marginal farmers in Nothing will go on record except Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Farmers in draft 1 Rayalaseema adopted tissue culture banana variety G9 Cavendish variety, which is reportedly gave high yields 60 to 70%, 70 tons per acre versus Walder 20% only, 20 tons only. This success had encouraged many farmers across drought-hit zones like Kadapa, Kurnool, Anantapur to shift the balanced cultivation. In one of the main banana growing zones, Pulivendula, Kadapa district, banana recently fetched rupees 22,000 per ton, but within a month, the price dropped to 8,000 per ton, that is 60% collapse. Many farmers say that they got good yield, but could not sell due to some ripe branches rooted on the plant or were thrown away. For 2025 Kharif season, due to drought and erratic rainfall, cultivation dropped significantly, and some districts like YSR Kadapa district only 19 to 35 growing was done compared to normal. Because the sharp drop in banana prices, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has ordered that bananas grown in Rayalaseema region be quickly transported to major demand centers like Mumbai and Calcutta by using air cargo to prevent the farmers' losses. That is the only greatest help to the farmers of Rayalaseema region by our state government. That is the pity, sir. Our party presidents and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, has visited the banana fields of Pulivendula region and intimated me to place before this matter before the central government through you, sir, for immediate relief to farmers of Rayalaseema region. I request the Agriculture Ministry, please take necessary steps to help the distressed farmers and keep it in mind that the tissue culture methods are not enough to guarantee stable income if a market fate turns bad. Thank you, sir. Ms. Susmita Dev. Mrs. Susmita Dev. Dr. V. Sivadasan. Dr. M. Tambidurai. Thank you, Chairman, sir. I want to bring to the notice of the House the very serious pollution situation in Delhi and the NCR. Every year we say that things will be improved, but every winter the same crisis returns. And this year it is no different. There has become so polluted that people are genuinely scared to step up. Sir, children are coughing, senior citizens are struggling to breathe, and many people are avoiding outdoor work because of the air simply not safe. Schools had to shut down again. Hospitals are reporting to rise asthma and respiratory cases. People are living with masks even inside the homes. This is not normal anymore. It has become unbearable. What is most disappointing is that despite so many meetings, committees and court directions, the ground situation has hardly improved. Stubble burning continues, dust from construction is everywhere, waste burning is happening openly, and the traffic pollution remains unchecked. Sir, it is also surprising that vehicles that had already completed their permitted life have been allowed to run for 1 year, one more year, which will add to the problem instead of returning. So, through this zero-hour submission, I sincerely urge the government to treat this as an emergency. We need strong and coordinated action, not just temporary steps. People of the Delhi NCR, because my throat is also the same problem I'm facing. That is why I'm raising this issue. Sri Sant Balbir Singh. Dr. Ashok Kumar Mittal. Sri Birajlal. बहुत बहुत धन्यवाद
सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष जो प्रश्न यहाँ उठाना चाहता हूँ वो है भारत में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। महोदय, इनकी आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ तक है। ये देश के विभिन्न भागों में, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह ये रह रहे हैं। महोदय, ये हमारे संसाधनों पर हैं और हमारे देश के अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझकर इनको अपने वोट बैंक के तरह इनको बसाया। अभी एक जो मसला चल रहा है अभी SIR पर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1983 में नेली दंगा हुआ था असम में। उसका कारण भी यही बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। जब वहां चुनाव हो रहा था, चुनाव के तारीख तय हुई, तो वहां पर असम के लोग, विशेषकर ऑल असम संग्राम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने डिमांड किया कि ये 40 लाख वोटर जो बनाए गए हैं इनको पहले निकाला जाए, उसके बाद ये वहां पर इलेक्शन कराया जाए। लेकिन उस समय की जो सेंटर में सरकार थी वो अडमेंट थी चुनाव कराने के लिए, और अल्टीमेटली वहां हिंसा हुआ और इस हिंसा में नेली में केवल 6-7 घंटे में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो जो इशू 4 लाख वहां पर 40 लाख वोटर वहां बसाए गए थे, वही इशू आज भी है। आज आप देख रहे हैं जब SIR की बात चल रही है तो आप टीवी पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, पश्चिम बंगाल से तमाम जो घुसपैठिए हैं वो अपने बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। महोदय, ये घुसपैठिए विभिन्न जगहों पर हैं और हमारी सुरक्षा के इसलिए खतरा है कि जो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन हुजी, हरकत मुजाहिदीन अल इस्लामी और JMB बांग्लादेश, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके फुटप्रिंट्स भारत में हैं। और महोदय, आज की जो हालात हैं और बांग्लादेश में जो राजनीतिक परिवर्तन है, अगर इनको नहीं हटाया गया तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भारत में जगह खोजने की जरूरत नहीं, उनको हाइड आउट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ हाइड आउट हैं। इसलिए देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, इसके लिए जरूरी है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, प्रत्येक राज्य में इनको बाहर किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, वहां हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, वहां पर उनकी डॉक्टर फौजिया खान, श्री बाबूभाई सेचंगभाई देसाई, बाबूभाई सेचंगभाई देसाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामले पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल के वर्षों में भारत में बाल कैंसर के मामले चिंताजनक रूप से बढ़े हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार हर साल लगभग 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर और लिम्फोमा सबसे आम प्रकार है। समस्या केवल बीमारी तक सीमित नहीं है, समय पर पहचान, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा और आर्थिक संसाधनों की कमी इसे गंभीर बनाती है। विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जागरूकता और इलाज की सुविधा अत्यंत सीमित है। यह स्थिति बच्चों और उनके परिवारों के लिए भारी आर्थिक और मानसिक बोझ उत्पन्न करती है। सरकार ने आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाएं शुरू की है, जिनका प्रभाव दिख रहा है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। अतः मेरा आग्रह है कि बच्चों के लिए विशेष कैंसर इलाज केंद्र स्थापित किए जाए, मुफ्त या सस्ती इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाकर समय पर निदान और इलाज को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा और विशेषज्ञ उपलब्ध कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
यह हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। अतः सरकार से विशेष कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि हर बच्चों को जीवन के समान अवसर और उचित इलाज मिल सके। धन्यवाद सर। श्रीमती रंजीत रंजन, डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी, श्री एस सेल्वगणपति। Thank you, Chairman, sir. Today my special mention is demand for internet facilities and teaching of regional language or mother tongue in all Kendriya Vidyalaya schools. I have a few suggestions to be brought in all the Kendriya Vidyalaya in the country. The first one is about the poor children who are admitted as per the right to education policy of the Government of India. It has become a boon to the children of the downtrodden to receive high-quality education and move up the social ladder. As part of their curriculum, they have to prepare projects and submit to the class almost every alternate days. For that, they have to seek internet facilities available in the private browsing centers for which they have to pay regularly. For poor people, this is almost impossible. Therefore, I suggest that we should establish internet and computer facilities in all the KV schools and allow the children to use them after the school time. Another important suggestion is about teaching of regional language or mother tongue. After a lot of persuasion, the KV in Puducherry has offered the teaching of mother tongue, that is Tamil language, from the 4th standard onwards. Now we have started even the KG level classes in Kendriya Vidyalayas. That being so, it will be only appropriate that the mother tongue is taught at least from the 1st standard onwards instead of 4th standard. I hope that the points raised are well-meaning suggestions which needs to be considered. I urge government to look into it. Thank you, Chairman. श्रीमती संगीता यादव। माननीय सभापति जी, आपने मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्जेक्ट है नीड फॉर वाइडर आउटरीच ऑफ भारत जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनिशिएटिव। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अत्याधुनिक पहल भारत जन के लिए केंद्रीय सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व की हार्दिक सराहना करती हूं। यह कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंडिजीनियस इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रहा है। इस पहल में बहुभाषी एआई मॉडल भारत की भाषाई विविधता को मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं, जिससे डिजिटल समावेशन को भी बल मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स और ट्रांसलेशन रिसर्च पॉक्स के जरिए अनुसंधान और सहयोग को गति मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारत जन कंसोर्टियम शामिल प्रमुख संस्थान इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार। संगीता मैडम, it is 0 over. You have to go accordingly. Oh, sorry, मैं ठीक हूँ। Sorry, sir. एक मिनट। तो उसमें आया नहीं था, ठीक है मैंने। Need to ensure strict quality verification of medicines. नहीं है सब, बस एक मिनट। जी जी, स्पेशल मेंशन को नहीं, 0 और को पढ़ा है। माननीय मैंने दोनों पर्चे मुझे मिल गए थे। माननीय You go ahead with that need to ensure strict quality verification of medicines. हाँ, मैं है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ।
मैं शून्यकाल के अंतर्गत जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय उठाना चाहती हूँ। हाल ही में कुछ राज्यों में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। यह घटनाएं औषधि निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण की लापरवाही को दर्शाता है। मैं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि विशेषकर औषधि विभाग से ये भी आग्रह करती हूँ कि कोई भी दवा बाजार में उतारने से पहले उसकी पूर्ण जांच और सत्यापन को अनिवार्य किया जाए। केवल प्रमाणित कंपनियों को ही उत्पादन की अनुमति दी जाए तथा मिलावट या लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि इसमें सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम अपने जन प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह। A special mention. No. 0 need for a regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils leading to the serious health concerns. इस विषय नहीं कर रहे। विषय मुझे सर बताया जाए, किस विषय का था हमको पता। Subject is need for regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils. ऑयल्स के ऊपर है। अच्छा ऑयल्स के ऊपर है। महोदय, हाल के दिनों में माननीय सभापति महोदय, हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है कि खाद्य पदार्थों में ऑयल की मात्रा कम की जाए। और अभी बाजारों में देखा जा रहा है कि क्रेमा नाम से बच्चों को कि क्रीम के अर्थ में क्रेमा नाम से बिस्कुट वगैरह ये सब बेचा जा रहा है। इसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर इस तरह से जो धोखाधड़ी कार्रवाई की जा रही है, इस पर रोकथाम लगे। और इस प्रकार के रोकथाम के लिए एक संस्था भी है जो अभी पुणे में कार्यरत है। हम चाहते हैं कि बिहार राज्य में भी एक इस तरह की संस्था, शोध संस्थान की स्थापना की जाए। बहुत धन्यवाद। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. She's not there? No. Sri Sanjay Singh ji. Not present. Not there. Sri Javed Ali Khan. Sir, Dharamshila ji. She's श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। मेरे पास है नहीं वो जो बोलना है। पेपर नहीं। Demand for establishment of a. Somebody can help him? Help her? Demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. नहीं, हमको पता भी नहीं। ओके ले लेती हूँ। ओके, श्री एडी सिंह, श्री केआरएन राजेश कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण, श्री संतोष कुमार पी, डॉक्टर सस्मित पात्रा, demand for special category status for OIS. Honorable Chairman, sir, it's an honor to give my first 0 hour before you on your maiden day in the House. Odisha, the state I belong to, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and my party, the Biju Janata Dal, over the last 2 decades, has been fighting strenuously for special category state status for the state of Odisha. Now, we do not do that only for rhetoric.
We do not do that only for namesake. The state of Odisha has suffered for more than 99 cyclones in the last 100 years. The super cyclone in 1999 took more than 10,000 lives. Fani, Hudhud, Philin, you name a cyclone that hits us on the east coast, one of them comes and hits in Odisha. Honorable Chairman, sir, you are from Tamil Nadu. We keep on hearing that whenever a cyclone is coming to Bay of Bengal, it will hit Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Odisha or West Bengal. And we are all, जो हिंदी में कहते हैं, हम लोग सब भुक्तभोगी हैं उस चीज के. So therefore, Honorable Chairman, sir, this idea that Odisha as a state which is ravaged by cyclones and natural disasters should be provided special category state status has been a demand from 4.5 crore people of Odisha over the last several decades. There is a solution to it. The solution is very simple. Whenever there is a natural disaster that strikes the state of Odisha or a similar state, allow a special category status at least for 3 years. The sharing pattern between the central share and the state share changes to 90:10, which is in line with that of a special category state. And once it changes to 90:10, the state has more resources to be able to bring back the infrastructure that has been destroyed because of the natural disaster like super cyclones and cyclones. Therefore, Honorable Chairman, sir, our leader, Shri Naveen Patnaik ji, has been consistently striving when we are in government and when we are not, that let the people of Odisha be provided the special category state status. You'd also be surprised, Honorable Chairman, sir, that in 2014, when the BJP, the Odisha State BJP brought about its manifesto, on page number 1, serial number 1, it was that if we come to power, we will provide a special category state. Today they are in power in Odisha. Nothing stops them to engage with the central government. I'm placing it on record. It is a matter of record. So therefore, leaving aside other things, let's work together to ensure that the state of Odisha is provided special category state status in the interest of people. Thank you. Sri Govindbhai Lalji Dholakia. Not there. Professor Manoj Kumar Jha. Sri Neeraj Danki. Dr. John Birtas. Sri Ayodhya Rami Reddy Allah. Sri Harish Biran. Srimati Priyanka Chaturvedi. Srimati G.B. Matar Giskam. Dr. Sikandar Kumar. Need to operationalize oxygen plants in Himachal Pradesh. Thank you, sir. For giving me the opportunity to speak on very important issue. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं, जिनकी कुल उत्पादन की क्षमता लगभग 38,100 डी टाइप और बी टाइप है। इनमें से कई प्लांट अभी भी ट्रायल रन या तकनीकी कारणों से कार्यरत नहीं हैं। जैसा शिमला के डीडी उपाध्याय अस्पताल में स्थापित 432 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला प्लांट तथा टांडा के आरपीएमसी में स्थापित प्लांट हिमाचल प्रदेश की मौजूदा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 42.7 मीट्रिक टन के बावजूद वास्तविक उपयोग 22.13 मीट्रिक टन के बीच अंतर को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता स्पष्ट है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत थुल के सिविल अस्पताल में 100 लीटर मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की अनुमानित लागत
रुपये 1.2 करोड़ थी, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर जीवन रक्षा करना था। स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी प्लांट का शिलान्यास नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप थुल तथा आसपास के 30 से अधिक गांवों के रोगियों को 35 किलोमीटर दूर पालमपुर के बड़े अस्पताल टांडा या पठानकोट जैसे दूरस्थ केंद्रों में रेफर किया जा रहा है, जिससे समय एवं आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री शक्ति सिंह गोहिल, श्री सतनम सिंह सांधु, concern over Indian youth being trafficked via the Tangi route and forced into foreign wars. थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। सर, इलीगल माइग्रेशन का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो पंजाब के नौजवानों से जुड़ा है। चेयरमैन सर, पंजाब के प्रवासी पंजाबियों ने विदेश में जाकर बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे रुतबे और कारोबार स्थापित किए, और वो हमेशा पंजाब के नौजवानों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो भी विदेशों में जाकर अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। इस एस्पिरेशन को लेकर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्लोबल नेटवर्क चल रहा है, उन नौजवानों को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है। पंजाब से बहुत सारे नौजवानों को झूठ बोलकर, गलत जानकारी देकर डंकी रूट के रास्ते बाहर लेके जाने का धंधा चलाया जा रहा है। और हमने देखा है कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट आती है जिसमें हमारे पंजाब के नौजवान जंगलों में उस गिरोह के चुंगल में पकड़े जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये नेटवर्क ग्लोबल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है। और पिछले महीने हमारे पंजाब के कुछ नौजवानों को रशिया में ले जाकर धोखे से जंग के मैदान में भेजा गया और कुछ नौजवानों की जान भी गई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी नौजवान हमारे ऐसे मामले हमारे सामने आए, मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे MEA का, विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी मामले हमारे ध्यान में आए और हमने डिपार्टमेंट के ध्यान में लाए, वो सभी को सुरक्षित वापस लेके आया गया है। लेकिन ये गिरोह लगातार अपना काम कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि डंकी रूट के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम जो हो रहा है हमारे देश से, उसको बेनकाब करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Now special